Welcome to you all. This is your 11th accountancy class. Topic is journal. Topic is journal. Today I am going to start illustration number 6. I am going to start illustration number 6. The first transaction is purchased goods. Purchased goods from Vinod. Purchased goods from Vinod of the list price of rupees 40,000 at 10% trade discount. At 10% trade discount. Clear? Now again I am repeating, purchase goods from Vinod of the list price 40,000 at 10% trade discount. Purchase plus goods आ गया, so purchase account debit. Purchase account debit. किससे खरीदा? विनोद से. To विनोद. लिस्ट प्राइस यानी कि ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे. अमाउंट इज 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू इज 10%. 10% माइनस करोगे 4,000. देन द रिमेनिंग वैल्यू विल बी 36,000. तो आप अमाउंट लिखोगे 36,000. Is it clear? Again I am repeating, purchase goods means purchase account debit. From whom you have purchased? From Vinod. So you will write to Vinod. Amount list price is given, so you have to suppose it is a trade discount and trade discount will be reduced, not written in journal. So amount will be 40 minus 10% 4,000. Remaining amount 36,000. So you will write 36,000 and 36,000. Return goods to Vinod of the list price of rupees 1,000. ठीक है? Listen it very carefully. Return goods to Vinod of the list price of rupees 1,000. Return goods. कौन सी रिटर्न? परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? तो उसके लिए हम ऊपर वाली ट्रांजेक्शन देखेंगे. दैट इज परचेज. विनोद से हमने क्या किया? परचेज. तो ये कौन सी रिटर्न हुई? परचेज रिटर्न. परचेज का डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस. टू परचेज रिटर्न अकाउंट. टू परचेज रिटर्न अकाउंट. किससे किया? विनोद से. सो विनोद विल बी डेबिटेड. विनोद विल बी डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट. द वर्ड इज लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस का मतलब आपको सोचना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू यू और ट्रेड डिस्काउंट आपको डिडक्ट कर देना है, नॉट शोन इन द जर्नल एंट्री. अमाउंट इज 1,000. But no percentage is given in this statement, so you will see on the upper statement, that is 10%. So you are to deduct 10%. 1,000 10% is 100. 1,000 10% is 100. 1,000 minus 100 is equal 900. So you will write the amount 900. Again listen very carefully. Purchase goods from Vinod of the list price of 40 at 10% trade discount. Purchase plus goods means purchase account debit. From whom you have to purchase? From Vinod. List price is given. It means trade discount. Trade discount not shown in the journal entry. The amount of trade discount will be deducted from the basic amount. Basic amount is 40,000 minus 10%. 4,000. The amount will be 36,000. Clear? Next entry will be return goods to Vinod of the list price of rupees 1,000. Return. Which one return? Is it say return
or is it purchase return? So we are to see the upper one. In upper entry we have done purchase, so it is a purchase return. Purchase having a debit balance, so purchase return having a credit balance. So you will write to purchase return account. From whom to whom you are going to return back? To Vinod. So Vinod will be debited to purchase return account. List price is given, so you are to deduct trade discount. Total amount is 1000 minus 100, that is 900. Clear? The third one entry. Paid cash to Vinod, rupees 34,000 in full settlement of his account. Clear? Paid cash, कैश गया, पेड कैश, कैश गया, गया तो टू कैश अकाउंट. क्लियर? किसके पास गया? विनोद. विनोद विल बी डेबिटेड. Vinod will be debited. With human being, no account will be written. With human being, no account will be written. 34,000. First word is cash. It means this is the value of cash. 34,000. Clear? अब विनोद के अकाउंट में आप कितना अमाउंट डालोगे? विनोद ने 36,000 का, विनोद 36,000 का माल हमने विनोद से परचेज किया, रिटर्न किया 900. 36,000 minus 900. The amount will be 35,100. So in the account of Vinod we will write 35,100. But on the debit side the amount will be 35,100. On the credit side amount is 34,000. So remaining difference is 1,100. Difference is here 1,100. What is this? The word is full settlement. Full settlement means discount. Full settlement means discount. So it is to discount received account. So this is discount received account. Again listen very carefully. Paid cash. Cash गया तो to cash account. किसके पास गया? विनोद. विनोद डेबिट हो गया. फर्स्ट वर्ड था कैश, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश ओनली 34,000. फुल सेटलमेंट मींस डिस्काउंट. विनोद से 36,000 का आपने माल परचेज किया, 900 का आपने रिटर्न किया, तो आपने पेमेंट करनी है 35,100 की. तो विनोद को डेबिट करोगे 35,100. टोटल ऑफ डेबिट विल बी टोटल ऑफ क्रेडिट ऑलवेज. कितना अमाउंट पेंडिंग बचा? 1,100. 1,100 किस में डालोगे? डिस्काउंट में. क्यों? क्योंकि वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट. क्लियर? आई एम गोइंग टू टेक नॉमिनल अकाउंट. Today I am going to take nominal account. This is in chapter number 9 and chapter number 7 also. What do you mean by nominal account? The account which hold the journal of expenses and incomes. Clear? The definition is nominal account which hold the journal of expenses and incomes. Formula: debit all the losses and expenses, credit all the incomes and gains. Clear?
डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस कौन से होंगे? सैलरी, वेजेस, कमीशन, miscellaneous expenses. If word is given with them paid salary, paid wages, paid commission, paid miscellaneous expenses, then they are known as expense. और expense क्या होंगी? हमेशा debit. Clear? If word instead of paid received will given them received salary, received wages, received commission, received miscellaneous income, then they are known as income, or income having always credit balance. Is it clear? So debit all the losses and expenses, credit all the incomes and gains. Is it right? I am taking some examples. Ram paid salary of rupees 10,000. पेड सैलरी पे कर दी, तो ये क्या हो गया? खर्चा। खर्चे का बैलेंस डेबिट। नाम क्या है? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 पे कर दिया, तो कैश गया, तो 2 कैश account. Here I am taking one more example. Ram paid commission of rupees 1,000. Paid plus commission, this is a expense, और expense का कौन सा बैलेंस? डेबिट. Clear? expense का कौन सा बैलेंस? डेबिट. खर्चे का नाम कमीशन. कमीशन account debit. Paid means cash गया. Paid means cash गया, तो 2 cash account. Clear? These are the example of expenses. अब हम इनको चेंज करते हैं. Ram received salary of rupees 10,000. अब वर्ड आ गया रिसीव्ड. रिसीव्ड आते ही दिस इज इनकम. इनकम का क्रेडिट बैलेंस. इनकम का नेम सैलरी. सैलरी कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में. 2 सैलरी अकाउंट. क्या मिलेगा सैलरी के रूप में? रिसीव कर रहे हो. क्या रिसीव कर रहे हो? नथिंग इज मेंशन, सो यू आर टू सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. Received commission of rupees 1,000. What is received commission? Received commission means income. Income का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. कमीशन का नेम, इसका इनकम का नेम कमीशन, तो 2 कमीशन अकाउंट. क्रेडिट में लिखा जाएगा. कमीशन के बदले क्या रिसीव हुआ? नथिंग इज मेंशन, सो यू गॉट टू सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. क्लियर? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी.